हेलो अस्सलाम वालेकुम. Thank you for joining us again for this episode. और इस episode में I have Adil again. He is the hiring manager at MotionQ. In this episode, we'll be discussing how can a candidate prepare for an interview. So Adil, at this point, we've interviewed tons of people. Definitely कुछ लोग seem to be more prepared than the others, and I think we can safely say that people who seem to be more prepared eventually get more opportunities. Yeah. So Adil, imagine that someone has a huge interview lined up and they're looking to prepare for the interview. What are your tips or thoughts around the things that they should consider when preparing for the interview? First things first, always be on time. And even if you can make the interview, then be courteous enough to let the hiring people know that you won't be able to make it. Because ghosting, that puts a dent in your future opportunities. Always try to let people know that maybe, you can reschedule or request for a reschedule. So the first things first, be on time and don't ghost. Yes. The other important thing is that before going for the interview, try to research about the company. Research इसलिए क्योंकि you would know if your work aligns with what the company does. Okay. और काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि the candidates come in or eventually they have to ask you what we do. Yeah. अब since we are in innovation studio and we are interviewing an animator, और अगर वो हम ही से पूछेगा कि what kind of animation do we use, Yeah. so it means they were not interested enough or they didn't put enough time and effort to understand कि उनका काम हमसे मैच कर भी रहा है कि नहीं कर रहा, because everyone has a different animation style. तो always try कि आप उनकी कंपनी की रिसर्च करें, उनके प्रोडक्ट्स के बारे में, सर्विस के बारे में, उनकी हिस्ट्री के बारे में, उनकी टीम के बारे में, एंड कि उनका कल्चर किस तरह का है. Because ever since the emergence of social media, every company is putting out whatever they do on their LinkedIn or Facebook and Instagram. तो आपको समझ आ जाती है कि अगर आपकी personality उस company में fit होती है कि नहीं होती. तो research about the company, culture, and if it's possible, तो interviewer जो है या hiring team है, उनको भी आप उनके बारे में research कर सकते हैं. Okay. तो उसमें ये होता है कि आपको उनकी personality का अंदाज़ा हो जाता है और उनकी पोजीशंस का अंदाज़ा हो जाता है, तो वो भी आपको एक तरह से इंटरव्यू नेविगेट करने में हेल्प करता है. Yeah. कि उनकी पर्सनालिटी के हिसाब से यू कैन टेलर योर आंसर्स इन द पूल ऑफ कैंडिडेट्स. वो आपकी रैंकिंग वैसे ही ऑटोमेटिकली वो उससे ऊपर चली जाती है. उसके अलावा जो रोल है, जिस रोल के लिए आप अप्लाई किया आपने, जिसके लिए आप इंटरव्यू के जा रहे हैं, तो मेक श्योर यू नो एवरीथिंग. कि अगर फॉर एग्जांपल इफ द डिस्क्रिप्शन इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स, अगर उसके 5 फेजेस हैं, तो 5 में से अगर आप 3 भी जो है वो काफ़ी हद तक उन चीज़ों को प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, तो इट मीन्स कि यू हैव अ गुड चांस ऑफ लैंडिंग द रोल. तो मेक श्योर कि यू वुड नो एवरीथिंग, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादातर उन्हीं के अराउंड आते हैं. तो आपको टैकल करने में आसान होता है. Yeah. और बाकी फॉर एग्जांपल इफ देयर आर थिंग्स दैट यू लैक, तो एटलीस्ट यू कैन गेट सम इनसाइट ऑन द इंटरनेट के जैसे कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपने कभी यूज़ नहीं किया एंड दे हैव अ रिक्वायरमेंट फॉर इट. तो you can research about it and you can gain some knowledge जो आपको at least इतना help कर सकता है कि you can tell them कि you are eager to learn about these things. And काफ़ी हद तक ऐसे होता है कि most of the software that you use, even if you haven't used a newer one, तो आप अपनी previous knowledge को भी अप्लाई कर सकते हैं. True. तो तो ऑलवेज ट्राई कि आप डिस्क्रिप्शन के एक पॉइंट को पढ़ें और ताकि उस हिसाब से आप जो है वो क्वेश्चंस को टैकल कर सकें. To me, I think that's the most important thing. Yeah. Because जब आप एक जॉब डिस्क्रिप्शन गो से पढ़ते हो बिफोर गोइंग फॉर द इंटरव्यू, व्हाट इट डज इज कि उससे आपको हेल्प होती है टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द मेन थिंग्स दैट दे आर लुकिंग फॉर. ठीक है. एंड देन बेस्ड ऑन दैट व्हेन यू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू, आप कोशिश ये करते हो कि आपकी जो स्ट्रेंथ्स हैं यू कैन फिगर आउट कि आप वो किस तरीके से अलाइन करोगे जो कंपनी है उसकी रिक्वायरमेंट्स के साथ. बिकॉज लेट्स नॉट फॉरगेट जो इंटरव्यूज होते हैं देयर जनरली विद हायर लेवल एग्जीक्यूटिव्स और द एचआर, एंड योर टाइम इज लिमिटेड एंड दे आर इंटरव्यूइंग tons of people. True. तो जो आपकी information that you want to get across, it needs to be concise. Yeah. तो जो आपकी strengths हैं, if you're able to keep your strengths and your weaknesses even, and the things that you're good at, if you're able to keep the information that you're gonna share with them in a concise and short manner, so definitely it's gonna be consumed better by the interview. I mean, yeah, that was my other point कि जो आपके answers हैं, they should be very natural and crisp. क्योंकि most of the interviews they start off with कि
introduce yourself, and if you have a very nice description prepared जिसमें you can encompass your previous experiences, your educational background and the things you have learned so far, तो I think most of the interview is covered in that, and उसी में जो recruiter उसको अंदाजा हो जाता है कि कैंडिडेट में वो जो चीज़ें हैं जो हम चाह रहे हैं, तो they don't have to ask other stuff at all. True. तो always make sure कि आपके जो answers होंगे वो crisp to the point and they should sound natural, क्योंकि कभी कभार ये होता है कि you have prepared something really well and you know वो जो pressure होता है that causes you to fumble, and eventually you choke in the interviews. And I think जो first impression होता है in such cases when interviews happen, that actually plays a huge role. True. जो आपके first few seconds होते हैं, I think when we're interviewing, we unconsciously get certain image in our minds of the candidate. So I think the first few seconds important होते हैं, so it's important, and most of the times I think your first question of that is around just introduce yourself or tell us about yourself. So you should have that concise explanation, description of your aims, your goals, and how best you can introduce yourself. तो आई थिंक वो चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एंड आई डोंट थिंक कि वो इट ऑलवेज नीड्स टू बी रिलेटेड टू योर वर्क. It should also include your personality, what kind of person you are, and what can you bring to the company. Not just in terms of work but to the culture as well. As long as interviewing for a company that is based in Pakistan, you don't have to focus much on English language, because I've seen people they have prepared their answers in English and they want to keep doing it. But वो जो preparation है वो मुझे लगता है कि when they interview and they start off and they realize कि it's not really working out. So always make sure कि you don't have to necessarily switch to a language जो आप naturally नहीं बोलते. Be comfortable. You can have a mix of it, or you can just completely do it in Urdu. It's not important कि आप English में इसको prepare करें, because your work and your experiences, they have more worth than इस तरह की चीज़ कि आप जो चीज़ आप करते भी नहीं है and then you're struggling to do it in the interview, तो वो भी आपका काफ़ी हद तक जो impression जो है वो down कर देता है, and you are not able to answer it clearly. So make sure कि you don't have to focus on speaking English at all. As long as आप अपने skills को articulately बता सकते हैं, whatever you've learned और ये चीज़ें आप बता रहे हैं, तो I think that should be enough for the recruiter to understand कि if you're fit for the role. Agreed. वही बात है कि confidence level आपका इसी तरह आता है कि as long as you're keeping your answers as natural as they can be. Most of the times interview के अंदर आप अपने experiences से ही draw करते हैं. Interviews जो है वो आपकी practicality को ही judge करने के लिए होता है. The thing is कि even in creative studio like us, तो अगर हमारा एक specific style है एक आर्ट का या एनिमेशन का, तो वी वुड लाइक टू नो कि आपका ये डेवलप किस तरह हुआ स्किल. तो आई एम श्योर कि कोई इवेंट था और यू मस्ट हैव सीन अ फिल्म और यू वेंट समवेयर एंड वहाँ पे यू नोटिस दिस थिंग दैट जो बहुत स्ट्राइकिंग थी आपके लिए, एंड यू वर लाइक आई वांट टू लर्न दिस. These are the stories that we are more interested in. I really like this point actually. I think stories are something that people remember. तो अगर आपका जो past experience है, if you can explain it in the form of stories, and how you started and how you landed that job, how it went, if you're able to do that in a creative storytelling manner, those are memorable and people remember those. So I think that's a good point. I think people can try and share the experience in a way that it sounds like a story. At the end of every interview, try to ask a very thoughtful question. It could be about the role, it could be about the company, or anything that could intrigue the recruiter. अगर फॉर एग्जाम्पल आपको फील होता है कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है इस इंडस्ट्री में, तो यू कैन आस्क व्हाट आर यू गाइस डूइंग टू फेंड ऑफ दिस कंपटीशन टू स्टे अफ्लोट इन द करंट मार्केट. ये एग्जांपल है. या फिर आप रोल के मुताबिक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट इज कंपनी कल्चर लाइक एंड हाउ डू यू गाइस सी मी फिटिंग इन टू दिस. So make sure that you have this one really intriguing question prepared at the end of the interview. I think preparation of course ज़रूरी है before the interview, but I think इसमें एक चीज़ जो कि added layer है, it's that you shouldn't appear over prepared. Of course. Right? Because I think sometimes we feel like the candidate is overly prepared, and their answers, they don't seem natural. We're expecting to form some kind of connection. ठीक है, तो it's important कि you sound natural, and you don't sound like a robot. So
I think that's important. इंटरव्यू में एक ऑटोमेटिकली एक नेचुरली आपको जिटर्स फील हो रहे होते हैं Yeah. एंड you fumble a lot and कुछ questions जो होते हैं वो बेशक आपने prepare किए होते हैं you have these mock interviews going on with yourself over and over again कि जी मेरा interview आ रहा है तो मैं ज़रा देखता हूँ कौन कौन से questions पूछे जा सकते हैं you call your friends you want to get that insight के किस तरह के सवाल आ सकते हैं if they're working in the same company वगैरह तो उसमें natural sounding ज़्यादातर seasoned professionals के लिए comparatively आसान होता है if you're starting out तो unless you're very extrovert आप डिफरेंट लोगों से रोज़ मिल रहे हैं तो आपको पता होता है कि मैं इस बंदे को टैकल कैसे कर सकता हूँ बट मोस्टली वी स्ट्रगल टू डू दैट बिकॉज वी आर नॉट दैट आउट गोइंग हमारा उसका इंटरेक्शन नहीं होता इनफैक्ट वी ट्राई टू रन अवे फ्रॉम दोज इंटरेक्शंस मोस्टली तो उसमें नेचुरल साउंड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है प्रिपरेशन इज इंपॉर्टेंट बट आपकी वाली बात से मैं एग्री करता हूँ कि ओवर प्रेड भी नहीं होना चाहिए कि जहाँ पे इट फील्स लाइक यू जस्ट यूजिंग दिस सम सॉर्ट ऑफ लेवरेज के जी यस आई नो द आंसर टू इट Creating an image. एंड उसमें कुछ आंसर्स जो होते हैं वो पता मतलब वो रिक्रूटर को पता चल जाता है कि दिस इज प्रिपेयर्ड Yeah. ठीक है कि And I think उसकी वजह से you can also risk sounding desperate. yeah So for me, when I'm doing interviews, I feel like it's an automatic turn off when जो candidate होता है they just appear too desperate. yeah I think एक human psychology है that you are attracted more towards things that seem to hold value, of course, and that are not easily you can't easily attain them. yeah So that's I guess an inside hack that I think candidates can work on so that they don't sound too desperate. Of course, आपके जो अपनी skills हैं, अपनी strengths हैं, put those forward, yeah and then tell the company that this is what you can do. yeah But don't make it seem like you really need this job and you don't have other opportunities. yeah the other hack is that even if you have researched a lot about the company and you want to impress the recruiter ke for instance we put out this one video we tried to show this one concept on social media and someone picked that up and use that in the interview. You can be honest about it. You can be like कि मैंने आपके LinkedIn page पे देखा था I just saw this one video. Yeah. It was very intriguing and I had some few thoughts about it. तो वो honesty जो होती है that is still way better. In fact वो ज़्यादा relatable हो जाती है एक अगर आपने एक चीज़ को prepare किया हुआ है but if you're being honest about it कि I thought about this question a lot of times and I tried to run different answers over and over again तो वो honesty भी एक तरह से काफ़ी human element बंदे का show कर सकता है तो you can just be like honest about it क्या prepared this so that's fine as well in my opinion. Perfect. Yeah, thank you so much, Adil. Thank you very much. Thank you so much for sharing your thoughts and your valuable feedback. Yeah. I hope you guys enjoyed the episode. If you did, hit that like button and please subscribe to our channel. Thanks.